Welcome to the lecture 8 of Organon of Medicine. Drug proving is given in the aphorism number 105 to 145. Next, Duque nature, follow the nature. That means follow the nature. That is given in the introduction, page 15, 16, 17. Duration of action of medicine is given in the aphorism number 130. Dynamic disease, aphorism number 11, footnote in the 6th edition. Dynamization, new method is given the aphorism number 248. Estee Helwig, Real Path. That is Real Path. Introduction by James Cross. Epidemic diseases, aphorism number 100. Epidemic intermittent fever, aphorism 241. Next, exciting and fundamental causes are given in the aphorism number 5. Causa occasionalis, exciting and fundamental causes are aphorism number 5, causa occasionalis. Okay, 50 millesimal potency is given in the aphorism 270, 6th edition. Then fixed miasm, aphorism number 46, general survey of diseases, acute and chronic, aphorism number 72. General or underlying symptoms, aphorism number 153. Genius of the medicine, aphorism number 130. Habit and customs, aphorism number 261. Hahnemann, the first socialist, is given the aphorism number 271. Happy go lucky operation, aphorism number 51. Highest title of cure, aphorism number 2. Homeopathic aggravation is given in the aphorism number 157 to 161, aphorism 282 in the 6th edition. Homeopathic aggravation in acute disease, aphorism number 157, 158. Homeopathic aggravation in chronic disease, aphorism number 161. Hufelen's remark, aphorism 8, footnote. Idiosyncrasy is given in 117. Important diseases have a number of symptoms, aphorism number 151. Importance of hygiene given in the aphorism number 4. ठीक है, 4 aphorism में दिया है. जब PSM पढ़ाते तो आई डोंट नो आप लोग के वहाँ कैसे पढ़ा गया, बट हमारे यहाँ पे जब PSM स्टार्ट किया था तो रिलेटिंग इट विद द होम्योपैथी, तो एफोरिज्म नंबर 4 समझाया गया था, है ना, जहाँ पे उन्होंने बोला ना डॉक्टर हैनमैन ने कि डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो कि डिजीज करते हैं, हेल्थ को डिरेंज करते हैं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है. सो दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन. ओके, नेक्स्ट, inappropriately named chronic diseases, aphorism number 77. Next, indisposition, aphorism number 150, एफोरिज्म 7 फुटनोट. 150 याद रखना, 150 मेन है और एफोरिज्म 7 फुटनोट में एक बार बस वो वर्ड आया है. इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ सम एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एफोरिज्म नंबर 59. इंक्वायरी ऑफ ट्रीटमेंट्स प्रीवियसली एम्प्लॉयड, एफोरिज्म 207. Insignificant causes are not the cause of chronic disease. That is given the aphorism number 206, footnote. Intelligent physician given the aphorism number 7, footnote. Intermediate remedy cinchona given the aphorism number 234. Intermittent diseases given the aphorism number 231.